today we will review date dimension functionalities in Power BI. Okay, that is the first thing we will do. Correct. We will also look at cross filter, because that cross filter is something which they will ask. So better date dimension, he will 100% ask. So in terms of interviews, you have an interview with Pro Sports, right? और तो कोई नहीं है ना तुम्हारा, Ritesh? Yes, sir. Now, yesterday we discussed total YTD, मैंने तुम्हें बता दिया, yes or no? Total MTD भी वैसे ही होगा, total quarter to date भी वैसा ही होगा. And same period last year, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि नहीं किया? रोहित, रितेश, तुमने ये प्रैक्टिस कर ली है कि नहीं कर ली है? Yes, sir. किया है ना? Same period, but it's very very simple. Calculate sum of measure and तुम्हारे डेट डिमेंशन से पीछे ड्रॉ होना है सेम पीरियड लास्ट ईयर डेट की. इज दिस क्लियर? यही है. Is this clear? Now if I need to add the business logic, I say calculate for example. But in this particular case, what happens is I have to group by date. So सर ऊपर वाला क्या कहीं वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया. Given that हमने वो कल डिस्कस कर लिया, अभी मैं उस पे नहीं कर सकता. So I have a company name here, I have a cost center name here, and I have to do a group by document date. So then, just one second, not the stock item, sorry dear. I come here. ये किया, ये किया, I put in a company name, I put in a cost ledger name, I put in a document date. You see, I have to group by document date. Then I can say that this will work directly. Are you understanding it? Now I can say based on this, this is my max date, this is the ये पूरी की पूरी historical आ गई. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. So now if I put it up, then it will work like this. Because it does not have the same period last year ka. Alternatively, I can, so this is saying dates between max and date and blank. So year to date ka kyun nahi aaya isme? Historical. And D1 if I take, ये historical sales का क्यों नहीं है?
But if I put sales later, then what happens? This comes. So if I put document date is what exactly? Date. It is joined with this dimension. So if I put up a historical sales between, why doesn't it work? This is putting it up in the maximum document date. So I can also say max of this date. Why is it not working? So now let's see what happens here. Why is this number coming like this? If I put this here, then what happens? इसको क्या हो? Here I have added the physical minus sum of debit.
तो मैंने ये सम किया माइनस दिस सम किया, where the dates are between this date and the maximum, पर ये blank और document date के बीच में maximum and condition नहीं आई ना. Now let's see what happens here. Am I able to do it? Because I need the to date. So basically I need the to date sales. No? मेरी पूरी historical sales कितनी है? Is it correct? Yes or no? ऐसे भी तो क्या रह सकता है ना. What I'm not able to understand is historical क्यों नहीं दे रहा है? इस तिथि तक का है ना. इस तिथि तक का है ना. So it is up to this date. So I cannot add a business logic here. Okay. So I have to remove it. So the basic thing, the way I designed it initially was correct. Between this date and this date, and there is a date key. मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ. फिर से देखो dates, मेरी date ये रही, start date and the end date. So instead of this, and I'm scanning the entire date dimension, should give you the to date sale. Because initially in dates between, what we had done was that we had put the date as less than this date. What happens if I say filter all date dimension? Okay, I'm filtering all where date is less than equal to A. ऐसे चलेगा? बोलो. Now let's see what happens. मतलब इसका डेट का आया ना, इस पर्टिकुलर इसमें आया. Why is it giving date less than equal to this?
Have we made a join? I've made a join. Is the cross filtering single or both creating a problem? ऐसा सिंगल कीजिए सर। उससे क्या होगा? तो उससे बेटर रहता है। It should be both. Why is it not giving year to date? जैसे closing balance में था ना, इसका closing balance का जब आया था तब कैसे किया था? ये क्यों नहीं आ रहा है? Then what happens if I keep it as D? अच्छा बेटा, भैया ये कैसे हुआ? क्योंकि जीरो इसलिए आ रहा है बिकॉज डेबिट माइनस क्रेडिट कर रहा है वो। ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट जो है इट मैचेस, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, राइट? That is the reason it's not doing it. See what happens is in any invoice debit is equal to credit. उदाहरण के लिए अगर मैं ये भी लूंगा ना, जैसे मैंने ये लिया डॉक्यूमेंट नंबर लिया बेटा, डॉक्यूमेंट डेट लिया, राइट? मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर लिया सपोज, एंड देन आई पुट credit amount and debit amount. So if you see, it will all match exactly. That is why it's giving exactly zero. समझ में आया बेटा कि नहीं आया?
So Yes, sir. because I needed to add the business logic, right, for making this measure here. So suppose I pick this one up. Correct? Now there is no max date and a min date. So I say here, this is blank. And this is less than equal to A. Now I should be able to get the year to date sales. नहीं सर आप ब्लैंक तो ये समझ ब्लैंक का मतलब मेरा कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है जो कि वो तो सर उसे रोहित तो वो पक्का, हाँ बेटा रोहित वो पक्का पूछेगा, वो ही कैन पक्का आस्क ईयर टू डेट मेरी हिस्टोरिकल टोटल सेल बता दो कैसे बनेगी. इज दिस क्लियर? यस सर अगर टोटल हिस्टोरिकल डेट, इफ द सेल्स इज ऑलरेडी देयर, then this will do. Either this or this will do. Dates between blank and this, or I filter the date dimension where it is less than equal to A. ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर ये क्या गड़बड़ हो रही है? मैंने क्या किया, is less than equal to A is greater than equal to, if I simply put it as less than equal to A तो क्या होगा? ये दोनों हटा दें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? Why the chickens is it giving me the same number? Now let's see. Because this is also picking it up, na? So if I pick
You know why is it happening? If I say filter all, now what happens? सही आ गया ना, तुम्हें समझ में आ गया बेटा क्या हुआ था? What was the mistake? In the historical sales between, because I have to add business logic here. So I have to put all ledger view here. Then it works. Is this clear? हाँ बेटा क्या ना? रितेश क्लियर हुआ कि मैंने गलती क्या की थी? अब देखो पूरा का पूरा मैच कर रहा है. दिस इज टू डेट वाला क्वेश्चन. तो अगर टू डेट वाला आ जाता है बेटा, एंड इफ यू हैव टू ऐड बिजनेस लॉजिक, तो इसका बेटा तुम ये डाल देना वहां पे लॉजिकल. रोहित रितेश समझ में आया बेटा कि नहीं आया? पूरा क्लियर नहीं हुआ सर. यार सुन, लॉजिकली समझो इसको. देखो व्हाट हैपेंस इज दिस डेट्स बिटवीन में मैं फिल्टर नहीं डाल सकता. मतलब मैं ये नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ये किया, आई कैनॉट एडिशनल कंडीशन हियर. वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा. सो आई नीड टू फाइंड आउट टू डेट. तो मैंने क्या किया, आई पुट अप वेरिएबल ए मैक्सिमम लॉक, मतलब दिस इज माय रो लेवल कॉन्टेक्स्ट. दिस इज माय मैक्सिमम डॉक्यूमेंट डेट एज ऑफ नाउ हियर. ये तुम्हें समझ में आया बेटा कि नहीं आया? इस रो में इतना है क्योंकि मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं ना बाय डेट. मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं ना उसको बटा डेट के. ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. तो इस, सो बाय दिस डेट लेस देन इक्वल टू दिस, तो मेरी पूरी हिस्टोरिकल सेल आ जाएगी ना. आई हैव एडेड बिजनेस लॉजिक आल्सो हियर. नॉट क्लियर? See, this is good for interview, but practically this might work. In the interview, he has to make a selection there. That guy there who's going to be there. So if I'm picking this up, if he asks you historical sales, so this is your range of answers. So in the actual interview, you say D, क्योंकि तुम्हें selection होना है तुम्हारा वहां पे. Because if you do a lot of variation, you'll not be able to understand it. You simply say dates between, blank is my minimum date and maximum is my current date. But in D, I cannot add business logic. Because मेरे को ये भी तो business logic चाहिए ना.
लेजर व्यू इज प्राइमरी, ग्रॉस प्रॉफिट यस। तो तुमने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट डेट ली and then you filter all the ledger view where document date is less than equal to this. Is this clear now? Yes, sir. उसी तरीके से in the date dimension equal to a same date last week, तो इस हफ्ते में कितना हुआ, this is less than equal to this and document date is greater than equal to B1. तो लास्ट वीक में विद बिजनेस लॉजिक आ जाएगा। इज दिस क्लियर? रितेश, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तुम सीधा वहां पे डेट्स बिटवीन कर देना बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। Okay, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि वो पक्का पूछेगा अप टू दिस डेट व्हाट इज माय सेल, तो वो सीधा का सीधा वहां पे वेरिएबल करके ये ब्लैंक करके तुम या तो ये कर सकते हो या डेट्स बिटवीन से ये से कर सकते हो। ये वहां पे क्लियर कर देना, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना। बिकॉज देयर ही हैज टू डू इट इन 20 सेकेंड्स, क्योंकि वो कोडिंग कराएगा ना। And make sure that your machine does not get stuck. मैंने पता नहीं, I'm running so many tasks that. Is this clear, Ritesh? Yes, sir. ठीक है, मतलब ये वहां पे गोचा मत करना उधर। सर और एक चीज पूछता है सर, डेट्स में सर रनिंग टोटल रनिंग टोटल कितना वेरिएशन चाहिए ना, तुम यहां से रनिंग टोटल उठा